हेलो फ्रेंड्स, CUCET 2022 लाइफ साइंस की आंसर की आ चुकी है। इस टेंटेटिव आंसर की में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनके आंसर्स गलत दिए हुए हैं। इसी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए इस वीडियो में हम रिलायबल एक्सप्लेनेशन उन्हीं क्वेश्चंस का लेकर आए हैं। तो प्लीज इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो शुरू करते हैं। द मोस्ट कॉमन इनिशियल स्टेप टू सेपरेट water soluble proteins from insoluble cellular material is electroporation, differential centrifugation, density gradient centrifugation और western blotting। डेफिनेटली जब भी हमें किसी चीज को सेपरेट करना होता है सॉल्युबिलिटी बेसिस पे, तो द टेक्निक हैज टू बी सेंट्रिफिकेशन। In the case of differential centrifugation, we separate the desired compound from contaminant in a stepwise manner with an increasing centrifugal speed. So the correct answer has to be the option B, that is differential centrifugation. Which of the following technique is used for tracing changes in intracellular location of proteins and metabolites? Chromatography, DNA footprinting, DNA unlabeling, or pulse chase experiment. During pulse chase experiment, the cells are exposed with a labeled compound for short duration, which is known as pulse, which is followed by an introduction of non-labeled compound, which is called chase, so that the metabolic fate of labeled compound can be chased down. So the correct answer would be pulse chase experiment. A protein required for infecting a host by coronavirus is known as receptor protein, PD, spike protein और polymerase basic 2। लास्ट 2 years से कोरोना वायरस की वजह से पूरा ह्यूमन सोसाइटी हॉल्ट पे है एंड यू आर आल्सो अफेक्टेड विद दिस। सो वी वर एक्सपेक्टिंग अ क्वेश्चन ऑन कोरोना वायरस डेफिनेटली। कोरोना वायरस की सरफेस पे एक स्पेसिफिक प्रोटीन होता है व्हिच वी कॉल इट एज स्पाइक प्रोटीन, which actually binds with the angiotensin converting enzyme or ACE2 receptor present on the basement membrane on us. So the option C is the correct answer, that spike protein binds to the ACE receptor which is responsible for the corona infection. The pH at which the net charge of proteins becomes zero under an electric field at room temperature is known as, definitely the answer has to be the isoelectric point. Isoelectric point is that pH at which the charge over the protein, that means the charge present on the carboxylic group, is balanced by the charge over the NH3 group. So the overall charge is zero. That means the amino acid becomes electrically neutral. It cannot migrate at either direction, cathode or anode. If you will higher the pH than Pi, then the amino acid is going to develop the net negative charge. While if you decrease the pH, then this same amino acid is going to develop the positive charge. So whenever you keep any amino acid at its Pi, then it is having the zero charge or electrically neutral. That is called as isoelectric point. So option D is the correct answer. The microscope that converts slight differences in the refractive index and cell density into easily observed differences in the light intensity is known as phase contrast microscope, bright field microscope, dark field microscope, or transmission electron microscope. Phase contrast microscope, it takes the advantages of minute changes in the refractive index of water and cytoplasmic component of the living cells, which turns them into the different brightness level in the magnified image. So the answer has to be the phase contrast microscope. Definitely transmission electron microscope होगा नहीं, because उसमें sample live cell use ही नहीं होता. In the case of dark field microscope, that will also not be there, because in the darkness you cannot detect the differences in the refractive index between cellular component and the background. Bright field में भी ये सब detect नहीं होता, so answer has to be the phase contrast microscope. Which of the following histone protein found in the chromatin has high lysine content? H1, H2A, H3 or H4? Basically, in eukaryotic histone protein, H3 and H4 are arginine rich, while H1 is the lysine rich. So here the compound has to be H1, which has lot of lysine content. Which of the following technique may be used for identifying a regulatory protein that acts by binding to the specific sequence of DNA? Is it Southern blotting,
Is it northern blotting? Is it southern western blotting? Or is it western blotting? You can use a compass which has the following feature. In the case of northern blot, we analyze the RNA analysis by using DNA probe. In the case of southern blotting, we analyze the DNA by using the DNA probe. In the case of eastern blotting, we actually detect the post-translation modification in the protein. While in the case of western blot, we quantify the protein using antibodies. In the case of southern western blotting, we use DNA binding protein analysis by using DNA as a probe. So here the option C has to be the correct answer. Which of the following disease in humans is caused due to the expanded microsatellite repeats? Is it Huntington disease, cystic fibrosis, tuberculosis, or alkaptonuria? First of all, we should know what is microsatellite repeats. Actually, अगर कोई भी 3 न्यूक्लियोटाइड का पेयर, that means genetic triplet, if it starts repeating itself in n number of times, then such diseases are called as trinucleotide repeat disorder या फिर microsatellite repeats. इसके सबसे दो बेस्ट एग्जांपल्स हैं, एक फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम जिसके अंदर आपका CGG it repeats itself in for n number of times, while there is another disease called Huntington syndrome जिसके अंदर आपका CAG it starts repeating for n number of times. So the option A has to be the correct answer. Which of the following disease is associated with Philadelphia chromosome? Retinoblastoma, arterial septal defect, chronic myelogenous leukemia, or myotonic muscular dystrophy? Philadelphia chromosome is a type of balanced translocation between chromosome 9 and chromosome 22. It is found in the blood cells which cause a form of leukemia which is also known as chronic myelogenous leukemia. So option C is the correct answer. A classification system that groups organisms together based on the similarity of their observable characteristic, or we can say morphological feature, is known as, that's very simple, has to be phenetic system. So basically what is phenetic system? Phenetic system is a method for classifying organisms based on their phenotype, how they look, and that's where the answer B is the correct answer. A class of immunoglobulin present in the serum which neutralizes toxins, activate complement, and crosses the placenta. That's very easy. Once you hear this word crosses the placenta, then answer is IgG. Only maternal IgG has the property which is the smallest antibody which can cross the placenta. Hence, the option C is the correct answer. Blood group differs in their glycosylation pattern, phosphorylation pattern, methylation pattern और ubiquitination pattern. ब्लड ग्रुप के जो एंटीजन होते हैं वो या तो शुगर के बने होते हैं या आपकी प्रोटीन्स के. फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स का केस आएगा तो RH सिस्टम, और अगर हमारा शुगर का डिफरेंस हमें देखना है तो इट हैज टू बी द ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम. तो ब्लड ग्रुप स्पेशली इन ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम द एंटीजन डिफर इन देयर ग्लाइकोसाइलेशन पैटर्न. The replication on template strand always proceeds in 5' to 3' direction. If the sequence of the template strand is ATC CCT, how would the correct sequence of the newly synthesized strand of DNA will be read? तो टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या होता है? टेम्पलेट स्ट्रैंड एक तरह से पेरेंटल स्ट्रैंड होता है जिसकी वजह से आपका उस नॉलेज की बेसिस पे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड या फिर डॉटर स्ट्रैंड सिंथेसाइज होता है. तो अभी यहाँ पे सीक्वेंस क्या दिया हुआ है? 5' से अगर हम रीड करें तो ATCCCT, तो इसका अपोजिट स्ट्रैंड क्या हो जाएगा? ए, क्योंकि रीडिंग हमेशा किस फॉर्मेट में होती है? 5' to 3' जैसा क्वेश्चन में भी दे रखा है. तो A G G G A T, that is option B. Which of the following condition is not essential to maintain Hardy-Weinberg equilibrium in a population? Large randomly mating population, small randomly mating population, absence of gene flow, or absence of natural selection? Basically होता क्या है? There are basically 5 main conditions which need to be followed as far as Hardy-Weinberg equilibrium is concerned. Mutation must not occur, यानी म्यूटेशन होने ही नहीं चाहिए.
नो जीन फ्लो, यानी कि आपके जीन फ्लो का कोई स्कोप नहीं होना चाहिए। पॉपुलेशन साइज हैज टू बी लार्ज, तो ऑब्वियसली स्मॉल पॉपुलेशन जो साइज है वो हार्डी वेनबर्ग फॉलो ही नहीं करेगा, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Bacteria produce an enzyme methylase which mainly play a role in. That's very easy. Basically, bacterial methylation is being done during the restriction host modification system, जहाँ पे कि methylase क्या करता है, वो अपने host DNA को या self DNA को methylate कर देता है, and restriction enzyme now cannot detect their own DNA, rather they cut the foreign DNA, which is a viral DNA. So option A is the correct answer, that it modifies the self DNA. In anaerobic condition, yeast consume more glucose than in the presence of aerobic condition. This phenomena is known as H-Slack effect, immersion enhancement effect, Warburg effect और Pasteur effect. देखिए, yeast के साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग कंडीशन है कि ये एक फैकल्टेटिव एनारोब है। दैट मीन्स व्हाट, कि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस डिसाइड करेगा कि ये कौन सा पाथवे यूज करेगा एटीपी प्रोडक्शन के लिए। अगर ऑक्सीजन नहीं है लेट अस से, then it will use fermentation for the process. That means fermentation यूज की जाएगी to get the ATP, जिसमें obviously ATP की yield कम होती है। While अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, that means ये बेसिकली क्रैब साइकिल में जाएगा और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ATP को प्रोड्यूस करेगा, तो ATP की yield बहुत ज्यादा हो जाएगी। ऑब्वियसली एटीपी की yield ज्यादा है, उसको अगर मुझे मैच करना है फर्मेंटेशन से, तो देन आई रिक्वायर मोर ऑफ ग्लूकोज। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में I require more glucose as far as yeast is concerned, and this effect is known as Pasteur effect. Which DNA repair system is affected in Lynch syndrome? Nucleotide excision repair, base excision repair, mismatch repair, and repair of double-stranded DNA. Basically, Lynch syndrome is a type of autosomal dominant cancer in which there is an inherited defect in the DNA mismatch repair system. So, option C is the correct answer. Which of the following animal has a pseudocele? Ascaris, Fasciola, Varroa or C. anemone? Pseudocele क्या होती है? Pseudocele is a type of cavity between gut and outer body derived from the persistent blastocele. और इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? Pseudocoelomates. Ascaris is one of the great example of pseudocoelomates. So option A is the correct answer. Which of the following is not a characteristic feature of bony fishes? Presence of paired fins, laterally compressed body, presence of homocircle tail और presence of placoid scale. एक काम करते हैं, एक बोनी फिश का एग्जांपल देख लेते हैं। तो बेसिकली बोनी फिशेस जो होती हैं वो एक तरह से ओवल शेप्ड बॉडी होती है उनकी, लेटरली कंप्रेस्ड होती है, तो दैट मीन्स ये तो करेक्ट है। नाउ उनके अंदर पेयर्ड फिन्स होते हैं, तो ये भी करेक्ट है। एज फार एज उनकी टेल को अगर हम देखें तो उनकी जो टेल होती है वो दोनों इक्वल साइज की होती है, दैट मीन्स दे हैव होमोसर्कल टेल। उनमें क्या नहीं होता, they do not have the placoid scale which is present in the cartilaginous species. So option D is the correct answer. The method which was first developed for gene mapping in bacteria was transformation in 1928, conjugation in 1946, transduction in 1952 or transformation in 1944. Basically Jacob और वुलमैन ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ऑब्जर्व की थी ड्यूरिंग बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन। दे ऑब्जर्व that the number of gene transferred from donor to recipient is directly proportional to the time given for conjugation. तो यानी कि अगर मुझे इस बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में कुछ जीन्स ट्रांसफर करानी है थ्रू कॉन्जुगेशन, तो अगर मैं ज्यादा टाइम दूंगा तो ज्यादा जीन ट्रांसफर होंगी, और अगर कम टाइम देंगे तो कम जीन ट्रांसफर होंगी। दैट मीन्स आई कैन मैप द डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स बाय दिस टेक्निक, एंड हेंस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। The gold standard method used for the detection of SARS-CoV-2 infection is, that's very easy. अगर हमें कोविड के वेरियस वेरिएंट्स का पता करना है तो मोस्ट रिलायबल टेक्निक इज आरटीपीसीआर। एलाइजा डेफिनेटली एक टेक्निक है, सार्स कोविड के लिए यूज भी हुई है, बट वेरिएंट्स नहीं पता कर पाएगी ज्यादा। आरटीपीसीआर ऑन द अदर हैंड कैन बी यूज, इवन इट इज बीइंग मैंडेटरी फॉर द, if you wanted to confirm that which variant you are being infected, आरटीपीसीआर आपको कराना पड़ेगा।
तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. Which one of the following phytochemical produced in plant defend against herbivores? Terpenes, lignin, flavonoids or tannins? Many plants they produce secondary metabolites or allelochemicals भी बोलते हैं उनको, which are deterrent for herbivores like phenolics, flavonoids and even tannins. तो देखने में ऐसा लग रहा है कि ऑप्शन सारे ही ऑलमोस्ट ठीक हैं, but tannins they are having stringent taste, reduced digestibility and even they are toxic to the rumen bacteria present in the herbivore gut. तो जनरली herbivores ऐसे प्लांट जिनमें टेनिन ज्यादा होता है उनको बहुत ज्यादा अवॉइड करते हैं. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. The rate of oxygen production is enhanced when there is the operation of cyclic photophosphorylation, non-cyclic photophosphorylation, both cyclic and non-cyclic photophosphorylation, or oxidative phosphorylation. Basically, the water is used as a precursor to liberate oxygen and electrons to activate the photosystems. ये वाला जो सिस्टम है ये नॉन साइक्लिक में मिलता है, साइक्लिक में भी एब्सेंट होता है. तो ऑक्सीजन की प्रोडक्शन कहाँ एनहांस होगी? इन नॉन साइक्लिक, बिकॉज साइक्लिक के अंदर ऑक्सीजन प्रोड्यूस ही नहीं होती है. The primary acceptor of carbon dioxide in C4 plants is phosphoenol pyruvate, ribulose 1,4-diphosphate, ribulose 1,5-diphosphate, or phosphoenol glycerate. As far as primary acceptor in C4 plant is concerned, it is the phosphoenol pyruvate. So option A is the correct answer. Which of the following is not a vitamin? Biotin, choline, histidine or nicotinamide? See, histidine is an amino acid, so definitely ये तो vitamin होगा नहीं. But biotin, as we know, it is vitamin B7, तो वो vitamin हो गया. Nicotinamide वो एक तरह से vitamin B3 है. Choline is also not a vitamin, but it is generally kept along with the vitamin क्योंकि हमारी बॉडी कॉलिन जो है वो बहुत ज्यादा नहीं बनाती और हमें फूड के थ्रू इसकी रिप्लेनिश करना पड़ता है. तो इस लॉजिक की वजह से हिस्टिडिन हैज टू बी द करेक्ट आंसर. A cloning vector may not contain origin of replication, multiple cloning site, promoter and selectable marker. देखिए ऑलवेज रिमेंबर एक टिपिकल क्लोनिंग वेक्टर जो होता है उसके अंदर ओराई हैज टू बी मस्ट. किस लिए? ऑटोनोमस रेप्लिकेशन के लिए. एक एमसीएस रीजन भी चाहिए जिसके अंदर वी कैन पुट आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट. एक मार्कर भी चाहिए, जनरली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, क्यों? हमें स्क्रीनिंग भी करनी है. प्रमोटर, इसकी जरूरत किस में होती है? एक्सप्रेशन वेक्टर्स में. एक्सप्रेशन वेक्टर्स के अंदर प्रमोटर होगा, राइबोसोमल बाइंडिंग साइट होगी एंड एक टर्मिनेटर भी होगा along with these features. So promoter को we can skip as far as cloning vector is concerned, but it is a mandatory part in expression vector. A lambda fast genome has a length of, that's very easy. A lambda fast genome is specifically having 48.5 kb genome, but its closest we can say option C, that is 42.5 kb. Chemically synthesized linker molecules containing recognition sequences of specific restriction endonuclease for creation of cohesive ends in blunt-ended DNA fragments are generally. बड़ा आसान है. दो तरह के केमिकल यूज होते हैं जो कि सिंथेटिक किए जाते हैं, जो बनाए जाते हैं, लिंकर मॉलिक्यूल्स एंड अडेप्टर्स मॉलिक्यूल. लिंकर्स जो होते हैं वो छोटे बेस पेयर के सीक्वेंसेस होते हैं जिनमें रेस्ट्रिक्शन साइट्स होती है. तो अगर हमें रेस्ट्रिक्शन साइट चाहिए तो ऑब्वियसली रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट होगी, तो उसका मतलब 6 kb से ज्यादा ही होगा, और 6 kb से ज्यादा है तो मतलब ऑप्शन ए हैज टू बी द करेक्ट आंसर, दैट इज 10 बेस पेयर. तो इस तरह से आप लॉजिक लगा सकते हैं कि जनरली लिंकर के अंदर 6 बेस पेयर से ज्यादा होते हैं और जनरली शॉर्ट डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं जो कि 10 बेस पेयर तक हो सकते हैं. Which one of the following is an autoimmune disease? Type 1 diabetes, type 2 diabetes, gestational diabetes or hemophilia? ऑटोइम्यून डिजीज जनरली इनहेरिटेड डिजीज होती है जिनके अंदर हमारा इम्यून सिस्टम खुद को ही टारगेट करने लग जाता है. टाइप 2 डायबिटीज विच इज अ कॉमन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जिसके अंदर हमारी बॉडी मिनिमल लेवल ऑफ इंसुलिन प्रोड्यूस करती है, जबकि टाइप 1 डायबिटीज जिसके सिम्टम्स जनरली अर्ली एज पे दिख जाते हैं, इसके अंदर हमारी बॉडी ऑलमोस्ट ना के बराबर इंसुलिन प्रोड्यूस करती है. जनरली पहले ये समझा जाता था कि टाइप 1 डायबिटीज जो है उसके सिम्टम्स
हमारे यंग एज पे दिखने लग जाते हैं, वेरी अर्ली एज पे दिखने लग जाते हैं, बट recent studies suggesting that one may acquire in their life type 1 diabetes in the later half also. Gestational diabetes is an example of autoimmune disease जिसके अंदर हमारी बॉडी के ऑटोइम्यून सेल्स जो हैं, यानी हमारी अपनी इम्यून सेल्स हैं, वो टारगेट करना शुरू कर देती है पैनक्रियाटिक बीटा सेल, और इसकी वजह से जो इंसुलिन है वो प्रोड्यूस नहीं होता। तो इस केस में ऑप्शन सी इज द करेक्ट। In which of the following plants the gametophyte does not represent an independent free living generation? Definitely, in the case of pinus, we see that the both male and female part are associated with the plant. So, pinus has to be the correct answer. Which of the following statement is true about gymnosperm? Albuminous cells in phylum are absent. The embryo that grows after fertilization is exoscopic in nature. Gymnosperms are dioecious in nature. The embryo that grows after fertilization is एंडोस्कोपिक इन नेचर। देखिए, अगर लॉजिकली देखेंगे तो ऑप्शन बी और डी में से ही कोई एक करेक्ट होगा। जनरली ये देखा गया है दैट एम्ब्रियोज दैट ग्रोज आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन द केस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स आर एंडोस्कोपिक इन नेचर। तो ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट। गॉशर डिजीज इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर which is associated, that's very easy. Gaucher disease is an example of lysosomal disorder, that means lysosomal storage disorder, और इसके अंदर क्या होते हैं? lysosomes they become the dump yard of fatty acids. तो ऑप्शन डी को क्या होगा? करेक्ट होगा। Hematopoietic stem cells are found in, again one of the most simple question, they are found in the bone marrow of pelvic area, sternum area and femur. तो ऑप्शन क्या होगा? ए। Which of the following vaccines does not provide lifetime protection? Polio, chickenpox, smallpox और MMR. एक और क्वेश्चन जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। पोलियो, कौन सी वैक्सीन पोलियो की? अगर इफ वी टॉक अबाउट ओरल पोलियो, दैट मींस द एंटीजन हैज टू पास थ्रू द आवर फूड पाइप। Generally, as we know, those antigens which are going through the food pipe, they have a natural tolerance. उनके अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो ज्यादा काम अच्छे से करता नहीं है, और इसीलिए आप देखते हैं कि ओरल पोलियो की वैक्सीन हमें ज्यादातर बार बार लेनी पड़ती है। बट यस, if you will replace it with another form of vaccine, maybe intravenous type of vaccine, so then it will be effective. So option A is the correct answer. The formation of endosperm before fertilization is a characteristic of, that's very easy. एंडोस्पर्म एक तरह का न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है जो एंजियोस्पर्म्स में मिलता है, एंड इसका काम क्या होता है? इट इज बेसिकली प्रोवाइडिंग द न्यूट्रिटिव कंडीशन फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Heterospory is not found in. Heterospory होता क्या है? Heterospory is basically the formation of two types of spores. छोटे वाले को हम मेल स्पोर्स बोलते हैं, लार्ज वन दैट मींस मेगा स्पोर्स को हम फीमेल स्पोर्स बोलते हैं। एंड जनरली इट हैज बीन सीन दैट टेरिडोफाइट व्हिच आर केम लेटर इन एग्जिस्टेंस, दे आर हेटेरोस्पोरस, बट जो अर्ली टेरिडोफाइट्स थे दे आर होमोस्पोरस। फॉर एग्जांपल टेरिस, टेरिस के अंदर या फिर हम कह सकते हैं टेरिडियम के अंदर हेटेरोस्पोरी नहीं मिलती है। Diagnostic test used to detect human immunodeficiency virus is Vidal test, autoradiography, ELISA. Yes, ELISA is the answer. That ELISA is generally used for the detection of HIV virus. तो इसके अंदर क्या करते हैं? HIV का एंटीजन लेते हैं और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के थ्रू we can detect the presence of the HIV virus in the serum. Option C is the correct answer. Which of the following antibody that can cross placenta? Again, IgG. Maternal IgG is the smallest antibody which can cross the placenta. So option A is the correct answer. Trypan blue assay is used for the counting of animal cells, quantification cellular protein, quantification of nucleic acids, identification of metabolites. First of all, we should know trypan blue assay होता क्या है? Trypan blue assay is basically a dye based assay जिसके अंदर trypan blue जो है वो लाइव सेल्स के अंदर नहीं जा पाती, डेड सेल के अंदर चली जाती है। तो हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, वी कैन काउंट व्हाट आर द हाउ मेनी टाइम्स लाइव सेल्स आर देयर इन कंपैरिजन टू द डेड सेल। सो जनरली एनिमल सेल कल्चर के अंदर इसका यूज होता है जहां पे हमें पता करना होता है लाइव सेल्स कितनी है और डेड सेल कितनी है। तो ट्राइपन ब्लू assay is used for the counting of animal cells.
मैच लिस्ट वन आइटम विद लिस्ट टू, एंजाइम्स दे रखे हैं, फंक्शंस पता करने, वेरी इजी। टोपोआइसोमरेज कहाँ यूज होता है? टोपोआइसोमरेज बेसिकली कहाँ यूज होता है? जो आपके रेप्लिकेशन फॉर्क होती है उसके आगे आपके यहाँ पर टोपोआइसोमरेज यूज होता है, जो कि क्या होता है, सुपर कॉइलिंग हटा रहा होता है। तो बेसिकली टोपोआइसोमरेज किसके लिए यूज होगा? डीएनए रेप्लिकेशन के द्वारा। तो ऑप्शन डी हैज टू बी द फर्स्ट। ऑप्शन डी को किससे कनेक्ट होना? फर्स्ट। तो यानी कि आंसर हमारा जो सी या डी में से ही कोई एक होगा। चलिए दूसरा पकड़ते हैं, सीडी के, अरे वाह, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, इट हैज टू गो विद ऑप्शन डी, सेल साइकिल रेगुलेशन, हम सबको पता है। तो बी हैज टू गो विद द थर्ड, B has to go with the third, that means option C। देखने की जरूरत नहीं है बाकी के, बट देखने चाहिए। हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज क्रोमेटिन रीमॉडलिंग में यूज होता है, और एंटी ट्रिप्सिन ये एम्फीसेमा के लिए यूज होता है, जो कि हमारी लंग सेल्स को मेंटेन कराने में यूज होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मैच लिस्ट वन आइटम विद लिस्ट टू, अगेन एनिमल्स दे रखे हैं और उनके लार्वल स्टेजेस दे रखे हैं। इंसेक्ट, कैटरपिलर, बी का 4 के साथ जाएंगे, बी का 4 किसके साथ है? ऑप्शन सी में ही है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू आइटम, एपिनेफ्रिन इन लीवर, एफएसएच, हार्मोन्स दे रखे हैं, लिस्ट टू में फंक्शंस दे रखे हैं। सबसे पहले क्लोजेस्ट फंक्शन पकड़ते हैं, एफएसएच। एफएसएच का हमें मालूम है एस्ट्रोजन से रिलेशन है, इंक्रीज करता है सिंथेसिस ऑफ एस्ट्रोजन, दैट मींस बी हैज टू कनेक्ट विद थर्ड, B has to connect with third, that means this again, no other option is left, that means option D is the correct answer। और बाकी का भी देख लेते हैं। एपिनेफ्रिन क्या करता है हमारा? इंक्रीज्ड ग्लाइकोजन टू द ग्लूकोज। वैसोप्रेसिन क्या काम करेगा? वैसोप्रेसिन करेगा आपका सी का फोर्थ के साथ, दैट मींस रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। और एपिनेफ्रिन इन स्केलेटल मसल्स क्या करने वाला है? कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 1। सिर्फ एक आपको पढ़ना है, क्लोजेस्ट जिसका आंसर आप कंफर्म हो, बाकी के सारे आंसर डेफिनेटली हो जाएंगे। अगेन वन मोर मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन। लिस्ट वन आइटम में क्या दे रखे हैं? नाइट्रोजनस बेस, एंड देन इन लिस्ट टू आइटम व्हाट वी हैव टू फाइंड। अगर डीएमिनेशन करा देंगे तो क्या बनेगा? तो लेट्स फाइंड आउट। साइटोसिन, साइटोसिन का डीएमिनेशन करते हैं तो क्या बनता है? यूरेसिल, दैट मींस ए हैज टू कनेक्ट विद थर्ड, ए हैज टू कनेक्ट विद थर्ड, दैट मींस आंसर बी या सी में से होगा। 5 मिथाइल साइटोसिन, 5 मिथाइल साइटोसिन क्या बनाता है हमारा? थाइमीन, थाइमीन मतलब option B has to connect with A, that means first, okay, so B has to connect with first, okay। Now adenine, adenine क्या बनाता है हमारा? hypoxanthine, that means C has to connect with fourth, again correct है। D को हमारा 2 होना चाहिए, that means D guanine क्या बनाना चाहिए हमारा? xanthine, जो कि बना रहा है, that means option B is the correct answer। अगेन वन मोर मैच द फॉलोइंग, वेरी गुड। लिस्ट वन आइटम क्या है? डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स यानी विटामिन सॉर्ट ऑफ दे रखे हैं और उनके फंक्शन बताने हैं। सबसे पहले क्लोजेस्ट जिसका हमें पता है उस पे जाते हैं हम। विटामिन ई एंड सी हमेशा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, तो सी हैज टू गो विद 2, सी हैज टू गो विद 2, सी हैज टू गो विद 2, ओके, या तो ए होगा या सी होगा, ओके। नैरो डाउन करते हैं। विटामिन के, विटामिन के क्या है? क्लॉटिंग फैक्टर है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है, तो बी का किसके साथ होना चाहिए? फर्स्ट, बी का फर्स्ट, दैट मींस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगेन वन मोर मैच द फॉलोइंग, नैरो डाउन करते हैं, सेल्स दे रखी है, फंक्शंस पता करने हैं। मैक्रोफाजेस, फैगोसाइट्स होते हैं, सिंपल, तो ए का किसके साथ होना है? 2 का, ए का 2 के साथ, ओके, तो यानी बी हो सकता है आंसर या फिर डी हो सकता है, ओके। नैरो डाउन करते हैं, बी, बी सेल्स का क्या काम है? एंटीबॉडी प्रोडक्शन, तो बी हैज टू गो विद फर्स्ट, बी हैज टू गो विद फर्स्ट, दैट मींस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एक और मैच द फॉलोइंग, नेम ऑफ द साइंटिस्ट, वी हैव टू कनेक्ट विद द डिस्कवरीज, ओके। एडवर्ड जेनर, वैक्सीनेशन, बट यहाँ पर याद रखिएगा एडवर्ड जेनर ने वेरिएशन को पोस्टुलेट किया था, वैक्सीनेशन कॉन्सेप्ट लुईस पास्चर के बाद आया था, बट इट्स ओके। एडवर्ड जेनर, वैक्सीनेशन, इम्प्रिंट जो हमारे दिमाग में उसके हिसाब से ही चलते हैं, ओके। एवलॉर्ड, एवरी मैकलॉर्ड मैकार्टी ने क्या किया था? दे हैव गिवन द केमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी, सो ए हैज टू गो विद द थर्ड, ए हैज टू गो विद द थर्ड, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। थैंक यू। तो इसी के साथ हमने देखा कि क्वेश्चंस बहुत आसान, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, हमारे साथ बने रहिए। ऐसे ही हम क्वेश्चंस के अलग अलग तरीके से शॉर्ट टाइम में कितनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन करें उसको हम देखते रहेंगे, बताते रहेंगे, टेबल्स आपको देते रहेंगे। अगर आपको कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्प्रेड द वर्ड। थैंक यू वेरी मच।